फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द इनकम टैक्स का जो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का बारे में। द न्यू रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC ये आपका 2020 का बजट में पेश हुआ था एंड this was applicable from the financial year 2020-21. That means 2021, 21, 22 ये न्यू रिजिम जो चॉइस है ये 2 साल हो गया। फिर भी lot of people have got their own difficulty in finding out which regime is suitable for that. कुछ सोचते हैं कि ओल्ड रिजिम इज बेटर एंड सम पीपल आर थिंकिंग न्यू रिजिम इज बेटर। ये therefore we have come out with this video a clear comparison between these two regimes, and we are also giving here there are 4 case studies that is up to income 60 lakh. Which regime is a better one, right? So friends, this is so far as the rate of tax is concerned. As you are seeing in the screen, the old tax regime has got 5%, directly 20%, then 30%. There are 3 options here. In new tax regime, the tax rate is slowly progressing. पहले 5, उसका बाद 10, 15, 20, 25, 30. So 5 से स्टार्ट होता है 30 तक 5% करके ये स्लैब में इंक्रीज होता है। So in a new regime, the rate of tax is slowly increasing, but in an old regime, the rate of tax is very fast jumping. However, in the old regime, you can have an option of different deductions. But in new regime, almost all the deductions have been blocked. There are total 120 exemptions and deduction, and out of that 70 has been scrapped by the department as the people are not using that one. And out of the 50, a very few deductions are applicable to new tax regime. That means new tax regime में आपको बहुत कम exemption और deduction मिलेगा। इसका लिस्ट भी मैंने बना दिया आप लोग के लिए, और old tax regime में आपको deductions, exemption ये आपको available. So let us come to the case study 1. इधर हम लोग लिए हैं individual having income 10 lakh और he does not have house rent allowance. Age group is less than 60 years. अगर आपका इनकम 10 लाख होता है, 80C में मान लीजिए कि आपका डिडक्शन 1,50,000, D 80D में 25,000. This is for yourself and the family. अगर सीनियर सिटीजन इंक्लूड है तो ये 80D का डिडक्शन और भी 50,000 बढ़ जाएगा। हाउसिंग लोन में मान लेते हैं कि आपका 2 लाख का छूट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000. सो टैक्सेबल इनकम अंडर ओल्ड रिजिम 5,75,000, न्यू रिजिम में आपका 10 लाख। ये सारा डिडक्शन न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। सो टैक्स लायबिलिटी एज यू आर सीइंग 27,500 अंडर ओल्ड रिजिम एंड द न्यू रिजिम में आपका टैक्स 75,000. सो 10 लाख इनकम तक ये अगर आप सोच रहे हैं कि इसी तरह का आपका इनकम होता है, तब वी आर सीइंग द ओल्ड रिजिम इज बेटर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस, एंड न्यू रिजिम में आपका डिडक्शन नहीं है, इसलिए टैक्स ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज आवर केस 1. ये केस में हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि assuming taxpayer stays in his own house, therefore there is no house rent allowance exemption. Then we are coming to case 2. Case 2 में भी
इंडिविजुअल इनकम को हम लोग 15 लाख तक बढ़ा दिए और नो एचआरए एग्जेम्पशन, एज इज लेस देन 60 इयर्स। फ्रेंड्स ये भी आप देख लीजिए, ये जो डिडक्शन आपको तो मिल जाएगा, उसमें टैक्स ओल्ड रिजिम में 1,40,400 और न्यू टैक्स रिजिम में 1,95,000, 15 लाख का अंदर। इधर जो डिफरेंस है, इसमें न्यू रिजिम में आपका प्रोग्रेसिव टैक्स इज वेरी लो, बट ये ओल्ड रिजिम में deductions and exemptions are there. Standard deduction for salaried employees there, therefore tax liability is less. So if you are a salaried employee or a business or you have got both, then if you are going for deductions and exemptions, I personally believe that the old regime is better and the new regime is not better at this level. Then you come to case 3. Case 3 में same thing we have taken, but we have taken the case income to 60 lakhs. So 60 लाख अगर आपका इनकम होता है, no HRA exemption, then friends ये टैक्सेबल इनकम आपका एग्जेम्पशन देने का बाद ओल्ड रिजिम में डिडक्शन एग्जेम्पशन का बाद 55,75,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 60 लाख, हियर 16,33,500 एंड 17,73,750। हियर ये जो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में ये आपका डिफरेंस more than 1 lakh tax का डिफरेंस हो जाता है if you are earning say income is 60 lakhs. So friends, ये जो old regime इधर भी देखते हैं कि it is a better option, right? ये तीनों केस जो है उसमें हम लोग assume करते हैं कि जो SSC he is staying in own house and he is not getting HRA exemption. फ्रेंड्स ये जो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF. सो देन वी आर कमिंग टू केस 4. इसमें आप देख लीजिए कि मैं HRA एग्जेम्पशन भी लिए हैं और नेशनल पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, लीव ट्रैवल कंसेशन उसको लिए हैं और इनकम लिए हैं 40 लाख। ओल्ड रिजिम में भी 40 और न्यू में भी हम लोग 40 लिए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं तो मिल जाएगा। 80C का डिडक्शन 1,50,000 न्यू रिजिम में तो नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय न्यू रिजिम में कुछ नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस मान लेते हैं कि मिनिमम हाउस रेंट हम लोग में लिए हैं, दैट इज 50,000। House rent allowance is not up, exemption is not available in case of new tax regime. So health insurance वो भी आपको new tax regime में नहीं मिलेगा। In this case, we have assumed that you have the person have got own family as well as some senior citizens are there. इसलिए हम 80D जो health insurance उसमें हम लोग टोटल 75 लिए हैं और लीव ट्रैवल अलाउंस ये ओल्ड रिजिम में आपका छूट है 25,000 लिए हैं, न्यू टैक्स रिजिम में तो ये सब कुछ नहीं है। और जो न्यू पेंशन स्कीम इसमें 30,000 और न्यू टैक्स रिजिम में कुछ नहीं है। सो टोटल डिडक्शन ओल्ड स्कीम में 3,80,000 और न्यू स्कीम में नील है। एंड अगर आप इनकम देखते हैं तो ओल्ड में आपका टैक्सेबल इनकम 36,20,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 40 लाख होता है और टोटल टैक्स लायबिलिटी 9,34,440, इधर 10,53,000। Here also we are seeing the new tax regime is a better one. Friends, I am telling you, the government, if you go to the database of the government का डाटाबेस जो SSC रिटर्न फाइल करते हैं उसमें शो करता है कि मोर ऑफ द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रिजिम एंड नोबडी
very less people are preferring that is new regime. So in order to make the new regime more attractive, the government may come out in the future with certain rate slash in the new regime to make that more attractive. So hopefully the government will do something, because the government is thinking gradually they will go away. That is all deductions and exemption they will be abolishing, and to simplify the tax at the rate. At the same time, the new tax rate will be changed. So that let us come to ये जो टेबल आप देखते हैं उसमें न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में एजुकेशन लोन इंटरेस्ट ये ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है। ये सारा चीज आपको न्यू में नहीं मिलता है। जो इंटरेस्ट होता है सेविंग्स बैंक का ऊपर 80 टीटीए टीटीबी का इंटरेस्ट होता है, वो भी आपको न्यू रिजिम में ये डिडक्शंस एग्जेम्पशंस ये सब नहीं मिलता है। बट हाउस रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का जो ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24A में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये दोनों में ही मिलता है। और so most of the deductions and exemptions are denied in the new regime, and old regime or new regime में which is better? Both the old regime and new regime have got different tax slabs. It all depends whether you want to claim deductions or you don't want to claim deduction. If you don't want to claim deduction, if you don't want to claim 80C, 80D, etc., all these deductions, then it is better that you go to new tax regime, because the tax is slowly progressing. But if you are going for exemptions and deduction, then always we see, friends, the old regime is a better one. I have come out with the 4 regimes, and before taking your decision, my request is to you compare with your total income, whether the old and new, you compare with the two total income, whether where the tax is more. You can compare this with you can go to script box income tax calculator. There is a facility and it is without any charge. You can put your income, it will show you that is old tax regime, new tax regime में कितना आपका tax आता है. You can check it, and based on this you can also make a choice or option. Friends, now the question is coming whether you can change from old to new and vice versa. Now whatever the provisions are there, an SSE can change from year to year, from old to new, new to old, except those who have the business and profession income. फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल है, जो बिजनेसमैन है, वो लोग चेंज कर नहीं पाए। अगर वो लोग चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम ओल्ड regime to new regime or new regime to old regime, they can do only once in their lifetime. But once they switched back to the existing tax regime, they will not be able to opt for new tax regime. So unless their business cease to exist. So friends, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग चेंज अगर करेंगे तो उन लोग को चेंज सोच के करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। So friends, this is all about the comparison between these two methods, and in the 4 cases we have seen the old method. If the SSE tax, the exemptions and deduction, the old method is fantastic, and in fact in India most of the people they are opting for the old method. I hope the government will do something to make the new method, new tax regime more attractive. Friends, our next video will be, there will be a likely change in the TDS, that is cash transaction. So we will have a new change, and thank you for your watching the video, and I hope you will make a comment and subscribe my channel. Thank you all.